let's get to the topic, Yeah. which is considered as a gift. Actually, this topic today is a gift to you guys, and that's why it's a Christmas special. It's a gift that you've been looking for a very long time. And I'm sure that you've seen the title. It's 0 to 1 crore in 5 years. So, how to achieve that? And I would like to say that it's also part of the Article 51AH series. So, as I say this in every podcast, Article 51AH is a civic duty that we scientifically and humanitarian grounds and from a secular mind discuss things in society, currently how they are, and bring reform. And we exercise this duty on a podcast. That is Article 51AH from Antara. So, Merry Christmas. I'm a common man, and I've written a small monologue for this. Uh, every month end, I start getting tiny heart attacks. I'm a common man. Uh, I end up calling my parents. I'm 23 to 25 or 30 years old. And I end up calling my parents around this time of the month, 26th or 27th. And अब मैं इतनी बार उनको इस टाइम पे कॉल कर चुका हूँ कि अब मैं 27th के बाद उनको कॉल करूँ तो उनको स्कैम अलर्ट आने लग जाए. I'm a common man. I Hello, who's this? Sorry. So first, let's start with the Christmas spirit. So can you give that small? We have a very small hamper. It's a Sure, very sure, simple sure. thing, just to add the Christmas feel to the podcast. बहुत छोटा है यार, मतलब एकदम राखी के टाइम पे देते हैं, but still. So Merry Christmas. The small gift Thank you. from Thank you so Bangalore much. Editorial Antara. Thanks a lot. So before we start the whole common man character thing and everything, uh, I've been actually going through the kind of work. I was actually researching for this podcast, and you're from a CA background, but you've written books Yes, on your books are more towards art. correct. So you have an artistic heart, but Yes. you have a very intellectual mind. And you're now working as a finance controller in Simply Learn. I was with Simply Learn. Mm. Right now, I'm working with another organization as Okay. an IFC consultant. Yeah. Yeah. Okay. Great. Yeah. Yeah. So any errors in my research is always I'm blaming ChatGPT. That's okay. Okay, we use Perplexity and ChatGPT for research, so ChatGPT, this is your fault. There have been so many frequent changes in my Yeah. career that probably ChatGPT couldn't Yeah. catch it. Yeah. Right. So, but I think I don't know. Pardon me for saying this, but more than any of that, the fact that you're Marwadi is great for this podcast. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Yeah, I get where you're coming from. yeah. Yes. Money. It's the no, it's the culturing, Mm. right? Uh-huh. Because for a long time, Uh-huh. I had this thought: we have Vedas, Puranas, we have Bhagavad Gita, we have all these texts on spiritual upliftment, we have Ayurveda, medical science. I always wondered कि the business science of the country कहाँ चला गया? Like, where is that book? We have Ayurveda, so clearly as a culture, we had medical science and we had Arthashastra, administrative science, martial arts, Kalaripaita, uh, Mallayudh, which is this one, and Pehlwani. We have all those schools, but when we were the most prosperous country in the Mm-hmm. world, we were the golden Mm-hmm. bird, but there's no book on business. So I realized the reason that is because Arthashastra is not all about at administration yeah, alone. huh, When we say Kautilya Arthashastra or Arthashastra by Chanakya, yeah, it has the business rules, the accounting, the yeah. hisab, and how you make money, how you spend money, how you tax people, all of that. Oh, Economy. okay. Because I always read from the parts where it was giving the techniques into managing people, Yes, and so that is the it is a combination of everything. So when you talk about administration, yeah, whether as an organization or as a government or even as a house, finance is always an integral part of administration. yeah, Always. Whatever you do, it's not just about do this and don't do this. It's yeah, about how you organize the entire thing. And there is no organizing without yeah, money. yeah, Even a temple needs money to organize. yeah. Yeah. And but uh, what I realized during that journey of exploring was that business is cultured into our society in some parts. Yes.
Yes. And I have had seen, like, I've seen friends of mine who are from, I mean, who are Uh-huh. Marwadis and who are Uh-huh. that background, Uh-huh. and they have a very good sense of money. Like, they're just good at it by Correct. nature. They Correct. just know, like, Correct. they have an internal compass, you Um, know? They know, it, ki, it okay, which decision to make, which not to make. yes, it is like we often say it is in the genes. Yeah. Uh, Both Marwadi and Gujarati Yeah. have this very Right. high business. Bania, right? From business Gujarati. no, Gujaratis are not called Baniyas. Yeah. Baniyas mostly are the Marwadi people who are Okay. called Baniyas. Okay. But nevertheless, we behave the same. Yeah. We act the same way. And there are two, three things, not just about thinking about money or understanding money very quickly, because that is one thing we are constantly discussing at our homes. Yeah. So that is one thing. There is a lot of money exchange in the events or the festivals or the rituals that we do at our homes. So there is a lot of hisab exchange of money going on every time you do things. Yeah. For example, when you are attending someone's wedding, so the close relatives in particular, how much somebody is giving, accordingly will get the gift back Hmm. or will get the money back. So there is always a very calculated exchange of money happening even in a ritualistic event. So that is how our brains work. Plus, the reason behind the business success or the commercial success, the way we get down to any place across the globe, not just the country, is because of the agility. Hmm. We are okay for any kind of atmosphere, any kind of natural plane, any language we are very adaptable to. We respect all the cultures possibly which comes across. Right. So that is why it becomes so easy for a Marwadi or a Gujarati to start a business and gel with people and flourish. Right. You know, when I uh, when I ventured into business for the first time, because I'm a business owner today, Hmm. I started working very hard, 12 hours, 15 hours, and I started putting that. The first good advice in the series of good advices I got in my life, the first good advice I got from a friend, Marwadi friend, Hmm. was Hmm. that कि यार तू ना employee की तरह business चला रहा है. So I was like, what do you mean? So he said, business is decision making. Hmm. Business is decision making. Hmm. It's not 15 घंटे काम करना. I Hmm. know that that is the culture now, the hustle culture, but he had a different perspective and he's very successful. So he said ki it is about distancing yourself from the Yeah. activities which are going Yeah. on and seeing it from a neutral mind Hmm. and taking consistent decisions on a weekly basis. You know that you're always navigating it in the right direction. Hmm. That Hmm. is amazing advice. तो probably you would have heard एक एक आजकल एक डिफरेंशिएटर टर्म भी आ गया है कि Yeah. आर यू अ बिजनेसमैन और अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. Yeah. So self-employed person is the one who keeps running to get things together and operate the business, whereas a businessman is somebody who looks at it from a distance and directionally rather than Directionally, operationally. operationally. तो वो एक difference है. But if you ask me, you talk about any businessman of any size, these two things overlap. Mm. वो कहीं न कहीं पे जाके ओवरलैप होता है, unless you become a corporate which is professionally managed, you have appointed different CXOs for each function. They are all running their respective shops and you just have to take a report back from them. Till you reach that stage, you have to get involved uh, to certain extent. Say, for example, if I talk about Flipkart for that matter, the CFO, the CEO, if I talk about Simply Learn, the CEO, the CFO, the CEO, they are involved in the operations and Yeah. they have to be, Right. unless you become the Narayan Murthy or Ratan Tata or Mukesh Ambani of the world, you will be there. Yeah. So, let's get to the topic, Yeah. which is considered as a gift. Actually, this topic today is a gift to you guys, and that's why it's a Christmas special. It's a gift that you've been looking for a very long time. And I'm sure that you've seen the title. It's 0 to 1 crore in 5 years. So, how to achieve that? And I would like to say that it's also part of the Article 51AH series. So, as I say this in every podcast, Article 51AH is a civic duty.
that we scientifically and humanitarian grounds and from a secular mind discuss things in society currently how they are and bring reform. And we exercise this duty on a podcast. That is Article 51AH from Antarag. So Merry Christmas. And I'm playing a character. I'm not good at acting. That I'm not an actor, but I decided to play a character for this particular podcast because I wanted to distance myself from my identity Mhm. currently, which is a business owner. I'm a business owner and I have a different setting, different bank balance, or different things. But I want to uh, get into the shoes of a common man. Of Yeah. Yeah. I'm a common man, Yeah. but somebody who now I will define who that person is. So I want to establish something first. So I I have a particular thing. Phone Pay is something that everybody uses. So I'll start from there. Check balance. तो ये establish हो गया ना बड़ा मजा आता है. एक बार establish हो गया तो. So fetching balance, 1,000 rupees. So as you can see, Okay. my account balance is 1,000 rupees. We are starting this podcast on this note. It's important that I establish this. That's why. I'm a common man, and I've written a small monologue for this. Uh, every month end, I start getting tiny heart attacks. I'm a common man. Uh, I end up calling my parents. I'm 23 to 25 or 30 years old. And I end up calling my parents around this time of the month, 26th or 27. And अब मैं इतनी बार उनको इस टाइम पे कॉल कर चुका हूँ कि अब मैं 27th के बाद उनको कॉल करूँ तो उनको स्कैम अलर्ट आने लग जाता है. I'm a common man. I Hello, who's this? Sorry. आपको जो व्यक्ति कॉल कर रहे हैं वो स्कैम है. अब पता नहीं कि स्कैमर पैसे मांग रहा है बेटा. Yeah. I'm a common man. I pay my taxes, but I don't. I also pay for the education. I also pay for the roads for extra for municipality near me. I also pay for hospital charges, etc., etc. So this is. I'm not going to step into politics. It's a promise from my side in this podcast. I'm not stepping into it. There's no need for it. No matter which political party you support, the reality is today, as a common man, I am paying for everything, right? Which in other countries, maybe some things would have been free or given to me. But today I'm paying for everything. In one way or the other, everybody pays across the world. Yeah. So I get a salary of 35,000 Okay. and my bank balance right now is $1,000. I send my parents around 5 to 6, which I take back around the end of the month. Mm. I have dreams, futures, but at the same time, I want to travel. I have expenditures. I have a girlfriend, and she also contributes. I contribute, and we hang out a lot. Or maybe I have a wife, and maybe I'm too young for this, but I have a kid, and my entire 25,000 goes into maybe 35,000. Like I have like $100 left at the end of the month. Mm. I'm a common man, but I also want to grow. I want to reach my first crore in 5 years, and I'm asking you for help. How do I do this? How do I start from here? And let's go step by step. What is step one? Sure. First of all, thank you so much for having me here and considering me a person who can advise on this. And a very interesting concept, I must appreciate that not just having a topic, but relating it back to the constitution. It's a very wide way of thinking. Um, Now coming to the finances. So we very clearly have a person who has just started earning. So Yeah, पैरों पे खड़ा हो गया right. है, right? So that is the first thing. कि now you are as such not dependent. So you have become independent, Hmm. but still it is not called financially independent. Hmm. And you can definitely you will some more questions in between. So Yeah, we can continue the conversation like this. So one is getting independent in terms of starting to earn. yeah. Then there is a financial independence, and then there is wealth. Hmm. Now what we are talking is from zero or say 1,000. Let's take zero only, reaching 1 crore, Hmm. right? And when we say 35,000 per month income, I think that we are assuming that this will remain constant. Yeah. Or grow. Or grow. If it grows, very good. Yeah.
even if we take it as a constant, Yeah. what possibilities are there? Oh, that's even great. Let, Like I let, was let's see that considering way. growing as a okay. So while we can assume growing, Hmm. I would say there may be events or chances that it stops. So let's consider that also. Okay. Let's consider that also. Let's be aware that there may be a an event, there may be a situation where it suddenly stops, or that it will stop at a certain point. Yeah. So we have those combinations. So the first thing where you have to start is, and by the way, I have made those mistakes, with the experience of which I am giving this advice. Yeah. First of all, when you start earning, what you have to do is create a reserve for yourself, a reserve which is equal to minimum 3 months of your average income. Hmm. If it is a salaried person, the average income will be constant. If it is a businessman, एक चाय वाला है, या कुली है, या पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, whoever it is, they have to first decide कि मुझे 3 महीने का तो रिजर्व बना के रखना है, मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ। उसके ज्यादा बनाओगे तो रिजर्व ही बनाते रह जाओगे, यू विल नॉट हैव Right. डिस्पोजेबल इनकम। सो हाउ विल यू क्रिएट दैट रिजर्व? सो whatever is your income bracket, Hmm. आप चाहे 8,000 रुपए कमा रहे हो एज अ लेबरर, आई एम सेइंग, चाहे आप 30-35,000 कमा रहे हो एज अ बिगिनर सर्विस क्लास, or if you are a rank holder, if you are an IIM grad, or you have done very well in your academics and somebody like Google has picked you and you are earning in lakhs, Hmm. irrespective, park 50% of your monthly income as reserves. Out of those reserves, one will be your 3 month to 6 month ka absolute reserve. And beyond that, once you have that reserve, beyond that, you will start investing. So my first question naturally is that 50% doesn't seem practical because 15 if I'm earning 35,000, then 18,000 I would is too less to spend in a month. Because you have already set certain targets or certain expenditure as a must have. Now, Okay. that is exactly where we kind of do tempted mistakes. Okay. The moment we start earning, and I did it. So there's nothing super financial intelligence about me. I did it, and I know that how tempting it is to do. Okay. The moment you start earning, you are like, अभी अपन किंग है। Hmm. नाउ आई हैव एवरीथिंग, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, एंड द वर्ल्ड इज इन माय हैंड्स, वो फीलिंग आ जाता है। Yeah. यू डोंट डिमार्केट, Uh, मुझे इससे ज्यादा नहीं करना है इन right. वॉट एवर सिचुएशन। Yeah. आप ये 50% को जितना एडजस्ट करोगे ना, कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज एग्जैक्टली वेयर यू स्टार्ट लूजिंग योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एंड लूजिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, देन लेट्स नॉट टॉक अबाउट रीचिंग टू 1 crore, वो नहीं होने वाला है। So what is financial discipline? Financial discipline is, if I may borrow my father's words, and probably he would have gained this wisdom from somewhere. He told in four pieces Okay. that, and maybe we can adjust it, but what he told is, in whatever you earn, you should give 25%, keep 25% for operating the house, Okay. give 25% to your parents, Okay. uh, invest 25%, like put in savings, Okay. and throw 25% in a well, कुएं में फेंक दो। And कुएं में फेंक दो literally is Okay. not throw it away. कुएं में फेंक दो means money in such a place that you don't pull it out when you need it, just like that. It Oh. is a reserve which is an absolute reserve, आप उसको टच नहीं करोगे। Okay. नहीं नहीं, अभी अरे यार, अभी ट्रैवल प्लान बन रहा है, Okay. तो Okay. लेट मी ब्रेक दिस गुल्लक। नो, डोंट डू Okay. दैट। वो बस गया Okay. कुएं में से। सो इट्स अ वेरी ओल्ड काइंड ऑफ क्लासिक एनालॉजी। कुएं में पड़ा हुआ पैसा, Uh, या कुएं में पड़ी हुई पैसों की पोटली, और से जमीन में गड़ा हुआ पैसा, yeah.
वो आप तब निकालते हो व्हेन इट इज़ लाइक एब्सोल्यूट नो अदर वे टू गो। Yeah. सो पार्क इट लाइक दैट, भूल जाओ, Right. वो पैसा आपके पास नहीं है। Mm. एंड हाँ, एंड दैट इज़ सो दिस इज़ द डिसिप्लिन। तो आपको मालूम है कि आप यू आर अर्निंग से 30,000 और 35,000, इतने में से ही मुझे घर चलाना है। Can I add a point to या that? या This is definitely for the so I've done this, and it's amazing. What you're saying is actually true. ये मैंने तब किया when I was very young. I was 22 or only हाँ, हाँ, 21 or 22. हाँ, हाँ, So I had a salary of I think 28,000 or something around ओके, that time. ओके, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि आई ट्राइड 1 ईयर ऑफ वर्किंग बट हाँ, एक साल में मेरे सारे पैसे उड़ गए यस, नॉट एबल टू एनीथिंग यस, so what I did is I and but again the point is this is before phone pay google pay paytm was this prevalent हुँ, so हुँ, that's why this adds a point I went to a bank हुँ, and I हुँ, said I don't want to know my net banking pin हुँ, they हुँ, said that's not possible we'll of course give you the paper मैंने वो फाड़ दिया literally ओके, I said I don't want the debit card. I don't want the checkbook. I don't हाँ, want anything. हाँ, I हाँ, just need to know the account number and IFSC. ओके, And whatever money I got, and what you're saying, पता नहीं भगवान का grace होगा कि ओके, exactly वो इतना 25% हाँ, हाँ, I हाँ, हाँ, started putting it in that account. हाँ, हाँ, कुएं में फेंक दो हाँ, because अब मेरे पास 4 सिचुएशन है. One, I remember I really want to buy a Royal Enfield. मुझे उस टाइम पे चाहिए था वो. दूसरा आई नीड टू गो ऑन ट्रिप ऐसे 4 सिचुएशन आए बट क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस था हाँ, टू गो टू एचएसआर इन ओके, दैट बैंक ओके, एंड टू they said that you need to get a withdrawal slip या, around या, that या, time या, या, withdrawal slip और उनके पास टाइम वहां पे अवेलेबल नहीं था बिकॉज फॉर whatever reason so they said you have to wait 2 days so 2 दिन के बाद withdrawal slip आता है फिर मुझे आके साइन करके देना फिर 4-5 days बाद ट्रांसफर होगा क्योंकि आई मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड मैंने ओके, सब मना कर दिया ओके, you will not believe but I actually saved up 2 lakhs हुँ, within I think 2 years, 2.5 years, I saved up 2 lakhs. ओके, And now emergency situation came. My friend हुँ, was हुँ, in a हुँ, very हुँ, bad situation. हुँ, I took out that money somehow, and but he got saved. Like उसको कहीं और से arrange हो गया. And वो दैट्स दो हाँ, लाख वो 3 महीने में spend हो गया. बिकॉज़ यू हैड इट। Yeah. Exactly. The moment you have it, it becomes a disposable income, and that is where you are tempted to spend it somehow. Okay. Now, if we come to spending, Yeah. uh, I'll let's go back to the investment thing. Yeah. 3 months. Yeah. Now you have created a reserve, 3 month to 6 month का आपने reserve बना लिया. Right. उसके ऊपर now you have a second bucket. Okay. कि अभी ये मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ. I'm adding this money further. अच्छा. ये भी रिजर्व है, हाँ. ये भी सेविंग है, हाँ. बट ये लिक्विड सेविंग है, ये मेरा पक्का सेविंग है। सो अच्छा. लाइक मेक इट अ नॉन रिकॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 इयर्स काइंड ऑफ वो थिंग। 3 months जो का. जो हाँ, हाँ. जो का रिजर्व है हाँ. कि इसको एज़ यू सेड कि इसको अगर ब्रेक करना है तो मुझे जाके बैंक में सर फोड़ना पड़ेगा। हाँ. आई विल हैव टू लाइक प्लीड एंड आई विल हैव टू साइन 3 फॉर्म्स एंड इट विल बी टफ। Okay. मेक इट टफ। Got उतना it. तो आपका टफ हो गया सो इट इज़ Yeah. लाइक एकदम जो होता है ना कि प्योर इंश्योरेंस लेवल का सेविंग है मैंने वो। I've lived that. हाँ। तो हो it's possible. अभी Yeah. ये जो नेक्स्ट पार्ट है जो व्हाट यू आर नाउ स्टार्टिंग टू बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट। Yeah. तो आपको आपको फिक्स करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिगर आउट कि ये जो रिमेनिंग 50% है उसमें मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी, क्लोथिंग, शूज, ईयरफोन, मोबाइल फोन, बाइक, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, नेटफ्लिक्स, ओटीटी, Rent. रेंट जो भी है, फिगर आउट ऑफ दिस रिमेनिंग 50। Mm. And if you think it is less, live with less. Mm. That's exactly the financial discipline I was talking about. होता क्या है? What I've seen practically, my junior colleagues doing it, my young cousins doing it. Salary है आपका 35,000, but you need iPhone 14 Pro. Mm. तो आप क्या कर रहे हो? आप you are buying it on a loan with an EMI. I'll tell you something. Probably people will find it as a shocker. Mm. This is financial bankruptcy. Okay. Technically speaking, this is bankruptcy. Mm. I'll explain you why. Mm. Bankruptcy, technically, by definition, means when your liabilities are bigger than your assets. Mm. Okay? Yeah. You have an income which is in future. Mm.
You have a liability to pay 1,40,000 plus interest, Mm. right? That liability is fixated on you. Yeah. So that liability is there. The phone you bought, the moment you opened it, the value has gone down Yeah. and it will continue to go down only. Mm. With every single touch, it will go down only. Mm. So you have your liabilities here, your asset is here, and everything that you had in terms of potential earning, you have already committed here. Mm. So your asset versus liability balance is negative. Mm. That's bankruptcy. Mm. So you have made yourself bankrupt the moment you started earning. Mm. You don't want to wait. नहीं मुझे you gave a very apt example of say Royal Enfield. Mm. नहीं मुझे तो ये बाइक चाहिए. So there are aspirational buyings, Right. right? I also had this aspirational buying thing. uh, बाइक लेना है, कार लेना है. What happens is these are not investments. We at times we mistake. Yeah. ये इन्वेस्टमेंट नहीं है. इट इज अ लग्जरी. आप चाहे छोटा सीडान ले लो, चाहे आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप क्या बोलते हैं लग्जरी कार ले लो, वॉट एवर. बट Yeah. दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स बाई Mm. एनी मीन्स फॉर एनीबडी. तो इसका वैल्यू डाउन होगा एंड दे विल कंज्यूम मोर मनी फ्रॉम यू. सर, बिकॉज यू हैव बाइक यू विल स्पेंड मोर ऑन इट. मुझे यहाँ पे एक सवाल पूछना है. So eventually, when I started business, I got that classic, and I was, and then I sold it. मैं ये क्यों मेंशन किया कि I bought it? That's important. क्योंकि there is the perception that you are living your life in a certain age हम्म. of opportunities today. हम्म. कि इतना कुछ है करने को और इतना कुछ अब ओपन हो गया है. So naturally, even though I'm from a spiritual side, if I speak, quality of life would be happiness, joy, peace, which comes from meditation or something. I would say that now. But also, quality of life, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. standard of living, quality of यस. life comes यस. from the gadgets we use, यस. the access we have, the places we go to, the parties we go to. This is in direct contrast with, करेक्ट. yeah. करेक्ट. So, what is your, My yeah? only tip or advice is patience. Mm. You are earning 35,000, no? Yeah. Park 18,000. Divide that remaining 18,000. Let's take 18 for comfort of discussion. Yeah. 18,000. Out of that 18,000, you start saving for 6-7 months. Yeah. कि ये मेरा डिस्पोजेबल इनकम है, इसमें से आई प्लान टू बाय सच एंड सच फोन. Yeah. जब ये भी उधार का है, हाउ हाउ ऑन अर्थ आई विल गो एंड आस्क फॉर मोर मनी कि मुझे एक बड़ा फोन लेना है. ही इज ऑलरेडी पेइंग फॉर माय एकेडमिक्स, माय लिविंग. मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, मेरी बुक्स, मेरा ट्यूशन, सब लोग सब वही कर रहे हैं. सो द प्रॉब्लम इज आपके अंदर वो जब तक वो फाइनेंशियल मैच्योरिटी नहीं है, दैट सिंसियरिटी यू डोंट है, तो आपको लगता है कि हाँ, टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. इतना पैसा है, इतना खर्च कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स का है, चाहे आपका अपना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. अच्छा, फिर मैंने उसको बोला भी कि व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग Mm. I will buy the most expensive phone in the market. Mm. Today, after 16 years of me being independent, Mm. financial independence is something we will again discuss, but independent, not taking money from my parents. Even till now, I haven't fulfilled that word. Even today, I have a phone which is expensive enough, but not the most expensive in the market. Because only after earning the money the hard way, I realized that it is not worth wasting it. Oh. Now, if you don't realize it, then see, paisa haath ka mail hai and it goes faster than you think. Yeah. And we can talk about the credit card or the debit card thing. In fact, debit card doesn't harm you as such psychologically. Credit card has a very strange kind of psychological effect. Yeah. While you are paying from credit card, since it doesn't get reduced from your bank balance, you don't realize spending it. You are spending, Mm. but you don't feel like spending. And when it hits you a month or 40 days or for 50 Later. days later, then you are kind of in a shock. ये पैसा कहाँ से उड़ गया? एंड देन यू गो, अच्छा दैट डे मैंने ये लिया था, सो ये पैसा गया. एंड देन बाय द टाइम यू हैव सम अदर प्लान्स.
मैं आपको एक छोटा-सा चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। 3 दोस्तों की कहानी। तो मैं और मेरे 2 दोस्त अ, अच्छा मैं तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हाँ, नहीं सो आई विल जस्ट बट आई विल स्टिल टेल दिस स्टोरी ऑफ ठीक है, उसी कॉमन 3 मैन के दोस्तों की फ्रेंड होने कहानी। दो। मैं कॉमन मैन हूँ और अब मैं 3 अलग लोगों की कहानी बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। 3 दोस्तों की कहानी बता रहा हूँ। तो 3 बिज़नेसमैन हैं और तीनों ने बिज़नेस साथ में स्टार्ट किया और तीनों सिमिलर फ़ील्ड्स में भी हैं। इनमें 2 लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिया, पहला अपना। और ये तीनों ने ऐसा बिज़नेस ऐसा स्टार्ट नहीं किया है कि अभी 10 करोड़ का फंडिंग ले लिया, शार्क टैंक चले गए। इट्स नॉट हुँ, लाइक हुँ, दैट। हुँ। अपना थोड़ा सेविंग येस, और येस, लोन लेके येस, येस। वैसा उन्होंने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया है। हाँ, या। वही बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया। अब ये जो 3 बिज़नेसमैन हैं, इसमें से एक ने 2 को कहा कि क्रेडिट कार्ड मत लेना, नो मैटर व्हाट हैपेंस डोंट टेक इट। सो 2 का जस्टिफिकेशन ये था कि अरे आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस आएँगे, सो वी हुँ, नीड अ क्रेडिट कार्ड फॉर दैट ऑफ हुँ, कोर्स। हुँ, इट्स लॉजिकल, इट्स नॉट दैट वी आर यू नो हुँ, सैलरीड एम्प्लॉइज़ एनीमोर। तो हुँ, हमारा बिज़नेस भी तो ग्रो करना चाहिए। तो उसमें से एक ने कहा कि ये बहुत डेंजरस डिसीजन है, डोंट डू इट। अब इसमें से जो 2 थे, इसमें 2 में भी फ़र्क है। जो इसमें से एक था, उसने क्रेडिट कार्ड लिया, हुँ। बट उसने वो 1 साल में क्लोज़ कर दिया। ओके। जो दूसरा था, हाँ। उसने नहीं किया। उसने हाँ। एक और क्रेडिट कार्ड ले लिया उसके बाद। हुँ, हुँ। जो पहला दोस्त था, जिसने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, वो आज एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है, बट वो उतनी ऊँचाइयों तक तो नहीं पहुँच पाया। जो दूसरा है, जिसने क्रेडिट कार्ड क्लो लिया, हाँ, उसने क्लोज़ कर दिया, हाँ। उसके लोन है, लेकिन वो थोड़ा और ऊपर है। ओके। I mean, I wouldn't say in terms of bank balance, I would say in terms of opportunity. जो तीसरा है, जिसने क्लोज़ नहीं नहीं किया, हाँ। उसका आज 1 करोड़ का लोन है। हुँ, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, हुँ, 1 सीआर ऑन हुँ, पेपर हुँ, लोन है। हुँ, हुँ। तो कमिंग बैक का टू राइट बॉल्स इन योर कोर्ट। या कमिंग बैक टू कि आप 1 करोड़ लोन पे होना चाहते हो या आप 1 करोड़ पॉजिटिव वेल्थ पे होना चाहते हो? And how you will reach there. So one thing is, and rightly put. So we have a start from zero. We have a negative side. We have a positive side. I already kind of explained ki how you should avoid going to the bankruptcy, राइट, the financial bankruptcy. क्योंकि या, उससे वापस बाहर आने में then it is very tough. या, It is very tough because then you have to save more. You have to control more. कि अभी तो इसको वापस मेरे को स्टेबलाइज करना है ना, आई हैव टू कम बैक टू जीरो या। एंड इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। आपको कॉन्स्टेंटली हॉन्ट करता है ये थॉट कि अभी आप नेगेटिव में हो। ओह! सो यू लिव अ मोर स्ट्रेसफुल वेरी लाइफ। स्ट्रेसफुल। आपके लिए वो एक प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब देन फिर एक चाय पीने में भी ना आपको फील आता है, शुड आई और शुड आई नॉट, क्योंकि मुझे वापस जीरो पे पहुंचना है। सो डोंट गो देयर। और उसका सोल्यूशन है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इवन दो इट गिव्स अस अ फील कि हम एक क्वालिटी लाइफ जिएंगे, बट इट इवेंचुअली लीड्स यू टू मोर स्ट्रेसफुल लाइफ। अफोर्डेबिलिटी, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज टू बी डिफाइंड बाय अफोर्डेबिलिटी। सी एवरीबॉडी नोज, उतने ही पैर पसारो जितनी चादर है। राइट, आपको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके कुछ भी बोले, सी एट द एंड लुक एट योर पॉकेट फर्स्ट। राइट, नहीं आप वो बोलेंगे कि व्हाई डोंट यू एक्सपांड योर चादर, व्हाई डोंट यू बाय अ बिगर चादर। या, यस, प्लीज डू इट, अर्न फॉर इट। जब आपका अगला इंक्रीमेंट आ जाएगा, जब आपको बोनस मिलेगा, बोनस में से फोन ले लेना, बोनस में से बाइक ले लेना, इफ यू राइट, गेट इट। आपका चलो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो एक क्रिसमस का सीजन आएगा, दिवाली का सीजन आएगा, होली का सीजन है, कोई तो सीजन आपका होगा, कोई राइट। आपके बिजनेस का। उस सीजन में जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी उससे ले लेना, वेट फॉर इट। वेट नहीं करना है, मुझे अभी करना है। दैट अभी चाहिए बिकम्स योर फाइनेंशियल इशू। एंड दैट कैन ओनली बी सॉल्व्ड विद फाइनेंशियल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं करना है, नहीं करना है। So राइट, for that matter, very candidly speaking, I was not financially disciplined. My wife brought that discipline. Very early in my married life, I went on such a shopping spree. जो मैं फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की बात बता रहा हूँ, I was financially bankrupt. Um, I took a होता है ना ऐसा चलते फिरते कि यार थोड़े पैसे चाहिए. So I took a loan from a colleague of 3,000 rupees. And till date we both are not able to forget it कि वो एक सिचुएशन था while I was
reasonably good earning person. Still, I had a situation for 1 week only. But my wife says, why? वहां तक क्यों पहुंचे हम? वी कुड हैव स्टॉप्ड। 2 चीज़ कम खरीद लेते, क्या Hmm. बिगड़ जाता? 2 महीने बाद खरीद लेते, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? ले लेते ना। बट व्हाई टू क्रिएट अ सिचुएशन कि आपको अपने दोस्त से 3,000, 5,000, 10,000, 1 लाख रुपया माँगना पड़ रहा है। Hmm. सी एक्सीजेंसीज़ आर अ प्रोबेबिलिटी इन एनीबॉडीज़ लाइफ। Hmm. कभी कोई ऐसा जो होता है ना कि अप्रिय घटना हो गई, कुछ गलत हो गया लाइफ में, देयर इज़ अ सडन शॉक, अंडरस्टैंडेबल। Hmm. बट व्हेन यू आर मेकिंग डिसिजंस टू स्पेंड, यू शुड नॉट क्रॉस दैट लाइन। तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वो लाइन कब कब क्रॉस नहीं करोगे, व्हेन यू हैव मार्क्ड इट। इतना तो गया, इतना तो रिज़र्व में डाल दिया, इतना भी मेरे पास में ये बचा है। तो मुझे उसी पे आई हैव टू फिगर कि मुझे घर कौन-सा रेंट करना है, मुझे अपने कपड़ों पे, ग्रोसरी पे कितना खर्च करना है, मुझे अगर ट्रैवल पे जाना है तो उसके लिए हर महीने ये ₹2000 मैंने तो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे रिज़र्व्स बनाना स्टार्ट करो। A very typical middle class thinking because we are talking about a number of 35,000 Wow. rupees. So basically reserves into everything you can Every create. single thing. ये कपड़ों के लिए बचा के रखा। Travel reserve. You have watched the movie दो दूनी चार? नहीं, नहीं, I have not. My God. Financial discipline or how a house runs in a small income bracket, that movie is a must watch. Okay. That movie is a must watch. That movie shows the battle of temptation versus need versus budget. So after the first 3 months of reserve, salary reserve, should we then consist? You said investment, right? Instead of Correct. reserve? So this is the कुएं वाला reserve. Yeah, done. Even after that, continue to save your 50% and then starts your journey of 1 crore. That is where you start your multiplier. Okay. So now you have to think of where you invest it. Yeah. So we'll come back to that. Yeah. हाँ, so अभी say probably um, and I don't deny that you would need a bike. Yeah. So figure out which is the most optimum by money, by fuel, by budget, the right bike for you. Yeah. I have a wish to buy a Hayabusa, but I Yeah. know that I can't afford it. Yeah. Even standing today, I can't afford it. Yeah. Because reasonably speaking, I have invested in the things which matter more for me and my family. So Hayabusa probably can wait. So you're saying that don't let your desires dictate your expend. Yes. Let your discipline dictate your expend. But at the Yes. same time, whatever you want to do with your life, know according to the discipline what Yeah. fits. Need versus greed or need versus desire. Hmm. ये चाहिए घर चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मुझे मेरा ऑफिस जाने के लिए, दिस इज समथिंग आई नीड। Yeah. Say, to take an example, laptop bag, Yeah. not even laptop bag. Yeah. लैपटॉप बैग आप ₹1000 का खरीद रहे हो कि 5000 का खरीद रहे हो? नहीं, That's where नहीं। the difference will start. हाँ, सो अभी जैसे स्पेक है या वो रिस्ट वॉच है, वो रिस्ट वॉच आपने ₹1500 वाला लेना है या 15,000 वाला लेना है या एकदम यू विल सिंपली गो टू नहीं यार 50,000 वाला यार 1 महीने का सैलरी तो रिस्ट वॉच ले ही सकते हैं। बट देन यू Hmm. डोंट रियलाइज कि हाउ इट विल इम्पैक्ट यू 6 मंथ्स डाउन द लाइन। मेरे ऐसे बहुत 1 महीने के सैलरी गए एक टाइम पे। हाँ, आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग 3 मंथ्स 4 मंथ्स सैलरी जस्ट टू बाय अ फोन। या रीज़न पापा बैठे हैं ना। वही, वही, वही। So, okay, this is one thing very important. Probably out of I won't say my personal wisdom, but somewhere I always had that feeling हुँ, कि ये तो उधार का है. हुँ, So the moment I started earning, I had this absolute rule. अभी पापा से पैसे नहीं लेना है. हुँ, तो there was a situation कि I wanted to buy a car. हुँ, अभी उसका जो डाउन पेमेंट है, I actually waited for 3 months. हुँ, माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स वर लाइक, "अरे ले लो ना यार, मतलब डाउन पेमेंट के लिए या तो लोन ले लो या घर से ले लो, हुँ। डाउन पेमेंट देना है ना।" I think you have a very clear understanding of what an income is. You have a very clear understanding of that. What is an income according to you? इनकम इज आई मीन हाउ डू वी पुट इट? सो बेसिकली अ सर्टेन वैल्यू दैट यू नो दैट विल बी कमिंग टू यू थ्रू योर बिजनेस और थ्रू योर सैलरी
salary is more consistent and kind of definite Yeah. unless there is something unpleasant happens. Business, it swings. Okay. But over a period, if you have run a shop for 6 months, you know Okay. how it will behave. Mm. There will be season time, there will be normal time, there will be dip. So you know how your cash flows will be. Yeah. So ultimately, income, we should not understand it as an accounting concept. Simply the money that comes to your bank through your independent earning sources. Mm. किसी से लिया हुआ पैसा, उधार पैसा, support पैसा, no, that is not income. So even when I bought a house, when I bought a car, वो डाउन पेमेंट मुझे ही अरेंज करना है. आई शुड नॉट बी गोइंग बैक टू माय पेरेंट्स और एनी फ्रेंड और मेरे अपना जो रिसोर्स मैंने बनाया है, आई हैव टू डिग देयर एंड डू इट. So coming back to this, once the 3 months of reserve is done, then after that, what? Step two. हाँ, हाँ. So yeah, we were Step actually two. on that. Yeah. So now you have to start your multiplier. Yeah. You so there are so many instruments to invest and grow your money. Hmm. Everybody has a very different kind of risk appetite and also the understanding of different investment tools available. Hmm. If you go kind of do a Google search or ask any expert, they will always tell you a bucket. Yeah. So there is a certain percentage which you should be in. You can invest as a mutual fund SIP Yeah. so that you are investing consistently. You don't कि चलो इस महीने नहीं किया. No, you have a consistency there. You can invest in gold bonds. You can invest in equity market, but equity market investments need a lot of research. So Hmm. only if you can give that time to it, do it. Hmm. Otherwise, don't do it. uh, Now there are apps where you have expert advices, so probably it has become relatively easier. So Yeah. you can simply pick somebody's portfolio and copy it for yourself. It again plays very different, that someone is having a very large portfolio, yours is a relatively smaller one. So when you start in a low income group, you should go for a little amount of that reserve FD is anyway there. Now you go for mutual funds, gold bonds. You know that these will consistently be Okay. growing only. Yeah. There's hardly any risk attached to these. Yeah. Because of being in lower income, you have to be little more cautious about where you put your money. Right. And however strong the promise may be, however lucrative it might sound, whatever may be the multiplier, ever put your money, don't ever put your money in any kind of gambling. Hmm. Yeah. एवर वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ गैम्बलिंग हो या स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ गैम्बलिंग हो. पीपल लॉट ऑफ पीपल गेट इनटू दिस ऑप्शन ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग और उसके बाद में Intraday. फ्यूचर्स एंड Intraday. इंट्राडे एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस विदाउट really having an expertise in that subject matter. And they see, you are a very small investor, you don't know what kind of big play is going on. But this is a very interesting point now we have arrived at. Because, so I have couple of people I know, and I'm still in the character, so I'm saying that I know a couple of people, but I'll these are real stories. I'm telling you that who have lost huge amount of money in intraday. ठीक है मतलब 1 लाख डाल के I दो know. लाख गया 3 लाख गया Yeah. 9 लाख गया Yeah. 10 लाख गया. I've seen so many people, Yes. but they're still investing. When I go and talk हाँ. to them today, they're हाँ. still doing it. हाँ. So when I talk to them and I say कि अरे भाई क्या कर रहे हो? Why are you doing this? They say that अरे तुझे पता नहीं है बहुत लोगों ने पैसे बनाए भी है इसमें से. What is, please help me understand this. Is this a myth? Let's break it, or is it true? It is to explain it in one word, नशा है. Hmm. तो नशा छोड़ना is very tough. But is there truth in it? कि लोगों ने बनाए हैं और या is it बहुत all लोगों ने बनाए a हैं. is it a myth? No, बहुत लोगों ने बनाए हैं. Hmm. Definitely बहुत लोगों ने बनाए हैं. Hmm. See, analogically again, आपको पता है कि कितनी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं Right. एवरी वीक? Probably average 3 to 5 world over, right? I इन mean द कंट्री, Hollywood and अच्छा Bollywood. इन द कंट्री हाँ. 30-40.
In a week. in a week. We don't even hear about it. ओह! अच्छा, हाँ, अच्छा इंक्लूडिंग स्मॉलर एंड बिगर स्मॉलर सब एंड ऑल, कुछ मिला ठीक है। के अच्छा। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप केवल, चलो बॉलीवुड की बात करते हैं, हाँ, ओनली हिंदी ओनली मूवीज़ हिंदी दिस थिंग, सिनेमा हाँ, तो आप एक एवरेज 3 का लेके चलो या 2 हाँ, का भी लेके चलो, राइट, तो पूरे साल में 100 मूवीज़ रिलीज़ हुई। राइट। 100 में से फ्लॉप कितनी हुई? हिट तो शायद 10 ही होती होगी ना? हाँ, 2-3 ब्लॉकबस्टर होती है, हुँ, 10 हिट हो जाती है। हिट इज़ बेसिकली उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और ठीक-ठाक प्रॉफिट कमा लिया, राइट, राइट, बाकी सारी फ्लॉप हो गई। हाँ। नाउ एवरीबॉडी प्रोड्यूसिंग अ फ्लॉप मूवी हैज़ एन एस्पिरेशन कि किसी दिन मेरी भी हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी। सो इट्स नॉट इट्स अ तो टू ये रिस्की। दोनों ही मिथ नहीं है, दोनों रियलिटी है। हुँ, इट्स अबाउट हाउ एफिशिएंट यू आर इन दैट गेम। हुँ, सी theoretically speaking, Afghanistan can be a world champion in cricket. हुँ, Theoretically speaking, West Indies can again be a world champion in cricket. हुँ। और see theoretically is a different thing. हम कभी फीफा वर्ल्ड चैंपियन हो सकते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग इन बिज़नेस शुड बी प्रैक्टिकल। हाँ, अभी आज आपका क्या सिचुएशन है, हाउ फार यू कैन गो इनटू इट। अभी रिसेंटली मी एंड माय कलीग वर डिस्कसिंग, सो ही सेड अबाउट समथिंग एंड ही सेड, नहीं यार, हाउ कैन पीपल बी सो लो आईक्यू। राइट, आई थिंक वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ पीपल डू अ मास फूलिंग एक्टिविटी, या कि ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। he has a different, he's a very smart, very well read and highly logical person, very deep into science and all of that. He said, no yaar, people can't be so low IQ. I said, see, between me and you we are discussing, the practical reality is 90 plus percent of the people on the earth, whichever country you pick, are low IQ. हुँ, That is the reality. And here what we are talking is, we are, I'm not trying to offend anybody. हुँ, See, it is a reality, and you learn through these kind of conversations that you don't have to be in that bracket. You have to be smarter. You have to make more wise decisions, हुँ। especially about money I would that you like to have. actually add to that. IQ is generally known as intelligence quotient, but somebody very rightly said it. I don't remember the name right now. That IQ is not just that. Mhm. Intelligence quotient is essentially the depth of knowledge in any field and the habit of application and the art of application. So it So also includes logic and reasoning. yeah, which is Yes, part of depth correct, of understanding. correct. So as we grow Huh, in IQ is not a general thing. It should be correct, field specific. correct. So when we talk about financial health or financial discipline, this is essentially growing right now because people are taking a deep dive into it. Correct, correct, correct. So I've So also I can be very high IQ about the books I've written, yeah the literary field that I have. I can be very low IQ about, something you don't much knowledge about. Yeah, say probably, pottery, pottery. yeah, Yeah, yeah. right. हाथ ही लगाना नहीं Yeah, आता है, वो exactly. समझ में नहीं आता कि how to hold it. Yes. Depth of knowledge and habit See, of application and art. having done so many things in life, आज तक मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता. So I am a low IQ guy there. So it's all okay. But It's field specific. it's field specific. Now, since everybody cannot be a chartered accountant, Hmm. everybody cannot be a high literate person in finance, we are sharing The here the basics. basics, the tips कि भैया ये तो बिल्कुल ही मत करो. So I have a ये question. this is the do and this is the don't. I have a No question. go. I have Yeah. a question for you. I have come across two things. One is through Money, a documentary on Netflix, because that's where most of the common people gain knowledge about this from. Okay. And this documentary said that divide your expenses into four parts. Mm. There is like, love, need, essential, Wonderful. right? Wonderful. So anything that you like, don't buy. Mm. Anything that is essential, buy. Essential is basically fundamental. That is your rent, your clothing. I mean, उसके बिना नहीं चलेगा. वही उसके बिना नहीं चलेगा. And here also you have to define. Yeah, आपको 60,000 रेंट वाला घर लेना है कि 40 वाला या 8,000 वाला या 5,000 वाला. yeah. Uh, That's how you have to define. So essential, हाँ. need and love is great. If Yes. you love something, invest in it. That's the contradictory part. But like, so what is the difference between love and like? This documentary said that like is I would like to have a bag which is uh, Louis Vuitton. yeah, exactly. But I would love to go on a trip this year. So instead of buying that bag,
that is like sacrifice that bag and focus on your love. I'm not saying you sacrifice your bag and focus on trip. I'm saying you figure out what you like and love. Um, So is that I can also I can put it this way, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लाइक एंड लव थोड़ा सा फिलोसफिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. okay? uh, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है अबाउट मेकिंग एनी स्पेंडिंग डिसीजन और Yeah. से अ न्यू स्पेंडिंग डिसीजन. एक Oh, तो आप that's ऑलरेडी great. कर रहे हो, Yeah. समथिंग यू आर ऑलरेडी डूइंग, Hmm. एंड समथिंग यू वांट टू डू नेक्स्ट, कि ये Yeah. मेरे को अभी करना है. व्हाट इफ यू डोंट डू इट? Wow. Okay. What if I don't do it? व्हाट विल फॉल इफ यू डोंट डू इट? आप ये क्वेश्चन पूछो, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार अपने आप से पूछो. और इफ यू कांट फिगर आउट, rather I would say always involve somebody in your financial decisions, always. So what if I say that I have a iPhone Mini, right? Mm. And this cost me only 40K. It's a second-hand phone, 35,000. And अभी इसका EMI भर के खत्म हुआ है. Now I want an iPhone, which is the latest one, guys. 14 Pro, iPhone 14, 15 भी आ गया शायद, iPhone 16, 15. okay. Now 16, yeah. So what is that? 1.8. 1.8. Okay, 2 lakhs. So now this has become a thing. I don't know, maybe the numbers are here and there. Yeah, It's okay. approximate. Yeah. So my salary has been upgraded to 40,000 now, right? And 45,000. I'm the second year of my working cycle, and I would love to buy that phone, right? It costs 1.8 lakh. So the question is, What if you don't? what if I don't? So if I don't, आप, I don't get all those features. I don't that live, हाँ, the camera, how the does it, quality. हाँ, that's exactly the point. Yeah. How does it impact you? How does it take something away from you? Is there, okay, if somebody is willing to or heading towards becoming a full-time YouTuber and this is an instrument for you, Mm. please do it, because it is a business investment. Now it is not more, no more Personal a pleasure. personal pleasure. Mm. Now it is a business investment. Even then, so when I bought my latest S24 phone, which was like, matlab, you may not believe, I'm in a good earning bracket. I waited 1.5 years to buy this phone. One Yeah. and a half years, not month. Oh. I waited for this कि नहीं ठीक है, अभी नहीं जम रहा है, थोड़ा और वेट करते हैं. And even while making the decision to buy this phone, I made comparisons for 3 weeks between the iPhone similar model and this one, and then I figured out कि I am getting exactly what I need between both the phones. That phone will probably cost me 23-25,000 more. रहने देते हैं. Mm. I don't attach that particular brand to my personality status कि लोग मेरे हाथ में ये वाला फ़ोन देखेंगे तो इम्प्रेस होंगे, नहीं. मैं जब बोलता हूँ तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं. Mm. एंड ऐसा नहीं कि एवरीबॉडी हैज़ टू बी अ स्पीकर और इंटेलेक्चुअल और समथिंग. आप अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए फ़ोन को क्यों यूज़ कर रहे हो एज़ अ अपनी पर्सन? पर्सनैलिटी को डेवलप करो, आप राइट? अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो. आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें. अरे लुक एट दीज़ पीपल यार, मतलब एक के बाद एक हमारे यहाँ से चेस चैंपियन निकल रहे हैं. आर दे द मोस्ट गुड लुकिंग पीपल ऑन अर्थ? I would love to add something here. In our previous podcast, which is just released, a meditation teacher was here. ओके, So me and him had a conversation back in the backstage after the podcast recording, ओके, and I was telling him about my experiment with meditation. and everything. तो उन्होंने मेरे को एक फनी सा इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताया. उन्होंने कहा कि भरत जब मैं बहुत छोटा था तो मैं बहुत गुड लुकिंग था एंड देयर इज अ ब्लॉग आई सीन हिम ओके, बहुत सही दिखता ओके. है वेरी गुड लुकिंग एंड वो इतना ज़्यादा था कि मैं हमेशा आईने में देखता था अरे यार हाँ, क्या सही हाँ, लग रहा हाँ. हूँ ये कपड़े हाँ, पहन ये हाँ, हाँ. ब्रांड सो आई डिड अ 6 months एक्सपेरिमेंट वेयर आई थॉट कि व्हाई लुक गुड लेट्स लुक बैड हुँ, हुँ. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये एज अ थॉट ओके. एक्सपेरिमेंट एंड आई सॉ हिज ब्लॉग आल्सो वेयर इज अ फोटो वेयर आई सॉ द एंड रिजल्ट एंड एज ही स्टार्टेड गोइंग इन दैट जर्नी ऑफ 6 months कि लेट्स नॉट लुक गुड लेट्स लुक बैड बाल लंबे हो गए दाढ़ी इतनी ओके, बड़ी हो गई ओके. और उनका आंख में फोड़ा भी हो गया ही इज सेइंग कि नेचर आल्सो सब कुछ देखता है यहाँ पे इतना आंख ऐसे इतना ओके. हो रखा है ओह! और अजीब सा लग रहे थे वो हाँ, हाँ, हाँ. and he said people eventually start feeling this Yeah, thing towards me yeah, yeah, yeah. and what he realized from that journey is that let me look presentable but I don't need to obsess about looking good Correct. but what I want to add in this conversation is he said one point he said मुझे 6 months में एक बात समझ में आया जिस भी चीज को आप
इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, वो फ़ील गुड हो जाएगा आफ्टर अ व्हाइल हुँ, हुँ, एंड उसका ऑपोज़िट फ़ील बैड। फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस चीज़ को सिर्फ़ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, घड़ी, अगर वो आपने बार-बार अपने मन में इम्पोर्टेंस दिया, तो इवेंचुअली वो अच्छी घड़ी आपको फ़ील गुड होने लग जाएगी और बुरी घड़ी आपके लिए फ़ील बैड होने लग जाएगी। ये चीज़ हर चीज़ पे जाती है। चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कोई भी यस, ये हो, यस, जिस भी चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, यस। वो फ़ील गुड होती जाएगी हाँ, और उसका ऑपोज़िट फ़ील बैड होता यस। जाएगा। आप यू स्टार्ट फियरिंग नॉट हैविंग इट। एग्ज़ैक्टली, तो वो कुछ भी हो सकता है, राइट। वो कुछ भी हो सकता है। अबाउट अबाउट एन ईयर बैक वी आर इन डिसेंबर यस अबाउट एन ईयर बैक आई हैड हेयर लाइक दिस लॉन्ग। या तो मेरे साथ भी वो हुआ राइट। एंड it is kind of very consistent and that is exactly why you need to read गीता repeatedly। मतलब वो हुँ, ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया एंड यू आर डन। हुँ। थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा या है श्योर, बट या देयर इज वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट गीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम अगर जीतोगे तो तुमको वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, राज्य मिलेगा। सो ही डिडंट से कि ये सब नहीं लेना है लाइफ में। ही डिडंट से कि सन्यासी बन जाओ, ही डिडंट से कि ये सब छोड़ दो। व्हाट ही सेड इज अटैच मत हो। हुँ, जो तुम्हारे पास है उसको एन्जॉय कर लो, लेकिन उस एन्जॉयमेंट से, उस चीज़ से अटैच नहीं होना है। हुँ, सो दिस व्हाट यू सेड कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि ये अगर मेरे पास नहीं हुआ, मेरे पास में अगर रॉयल एनफील्ड नहीं है, हुँ, आई एम फीलिंग हाफ, आई एम हुँ। फीलिंग एम्प्टी, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट। मेरे पास में वो आईफ़ोन नहीं है, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट। देयर वाज़ अ वेरी पॉपुलर थिंग कि वो एक बंदा है 16 घंटे आईफ़ोन लेने की लाइन में लगा है। क्या गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो यार तुम 16 घंटे लाइन में लग के? अगले दिन वो फ़ोन तुम्हारे घर पे यू कैन बाय इट एज़ इट इज़ यार। मतलब व्हाई आर यू अननेसेसरीली आर्टिफिशियली क्रिएटिंग इट सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड तो हमारा जो जो मेरा टिप है वो यही है, व्हाट इफ आई डोंट हैव इट? मेरी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा? और जब आप ये पूछने लगते हो ना अपने आप से, तो समव्हेयर आपको पता चल जाता है कि नहीं यार ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ चीज़ के लिए आप ये बोलो कि नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको आपको मेज़र करना आना चाहिए। पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, सिबलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं, आपका लव इंटरेस्ट या आपकी स्पाउस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चे इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपका ऑफिस, आपकी गाड़ी। लेकिन जो भी आप नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, जो भी आपको टेम्प्ट कर रहा है कि अरे यार! मुझे तो पेरिस जाना है। हुँ, ठीक है, अगर आपके पास में वो 100 में से 50 निकाल के, वो 30 निकाल के, अनदर 15 निकाल के जो बचा हुआ 5 है, जो आपने एवें ही लिक्विड छोड़ रखा है, वो 5 अगर जुड़-जुड़ के 3 लाख हो गया है, हुँ, जाओ पेरिस। हुँ। बट लोन लेके पेरिस जाना है, ईएमआई करके पेरिस जाना है, एज़ इफ इट विल मेक समथिंग down for you if you don't do it, then you are heading for a trouble. So essentially, financial discipline leads you to a stress-free life, Yes, and also it leads you to a life where you learn to value what you have yes. because you are not giving importance. Do the things अब you आपके don't. पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन सेट कर लिया अपने हाँ, लाइफ में।